नेक्स्ट पार्ट इज मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है obviously they have high melting point and boiling point because of they have high melting point because they have large number of unpaired electrons. Now अगर इसको हम डायग्रामेटिकली समझाएं, मेल्टिंग पॉइंट वर्सेस एटॉमिक नंबर, तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। जैसे टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, क्रोमियम तक इंक्रीज करता है। देन देयर इज अ डिप, और मैग्नीज देयर इज अ डिप, और फिर इंक्रीज करता है। तो इस तरह से आयरन फिर ऑलमोस्ट सेम, और लास्ट में जाके जिंक के लिए थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, इस तरह से ये आता है ग्राफ, है ना। तो दूसरे की बात करें अगर 4D सीरीज में, तो 4D सीरीज का भी ऐसे बढ़ेगा, और इसमें भी ऐसे ही जो क्रोमियम था, यहाँ क्या होगा मॉलिब्डेनम, और यहाँ भी टेक्नीशियम के लिए एक डिप आएगा। फिर टंगस्टन, तो ये टी क्रोमियम के लिए, मैग्नीज के लिए, देखो क्रोम और आयरन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है क्रोमियम से ना, और यहाँ पे भी अर्हेनियम के लिए जो है ऐसे डिप आएंगे। ठीक है, डिप तो नहीं है, तो डिक्रीज करता जाता है ना, और एनी हाउ टेक्नीशियम और मैग्नीज के लिए तो डिप आते हैं। तो पहला तो पॉइंट हो गया कि मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होता है, पहले इंक्रीज करता है, रीचेस द मैक्सिमम विद एटॉमिक नंबर एंड देन डिक्रीजेस। ठीक है, तो मैक्सिमम होने का रीजन क्या है हाई होने का, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो फिर 3D से 4D जाने में और 4D से 5D जाने में क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो फ्री मूवमेंट है वो बढ़ जाएगी, फ्री मूवमेंट इंक्रीज होती है जैसे जैसे साइज बड़ा होता है, और देयर मेटल मेटल बॉन्ड इज मोर फेवरेबल, मतलब मेटल मेटल बॉन्ड बनाने की उनकी जो टेंडेंसी है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, एज वी गो डाउन द सीरीज, मतलब हैवियर मेटल्स में, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है इंक्रीज। इसलिए टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट जो है दैट इज हाईएस्ट, टंगस्टन का हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। और जब लोएस्ट की बात करेंगे तो किसका होगा? स्कैंडियम। स्कैंडियम देखो ना बहुत ही नीचे होता है। स्कैंडियम हैज लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, टंगस्टन मैक्सिमम, स्कैंडियम मिनिमम। इस स्कैंडियम में एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
ठीक है। अब बात करते हैं कि ये मैग्नीज और टेक्नीशियम में डिप क्यों आता है। तो मैग्नीज और टेक्नीशियम में डिप आने का सिंपल सा रीजन है कि मैग्नीज होता है 3d5 और टेक्नीशियम भी ऐसे ही 4d5 दे हैव exactly half-filled configuration. So because of half-filled electronic configuration, the ability to form metal-metal bond is less because the electrons are tightly held by the nucleus. तो उनका जो पार्टिसिपेशन है मेटल-मेटल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स का वो कम हो जाता है, इसलिए हम बोलते हैं इनका मेटालिक बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, वीक। तो ऑब्वियसली वीक मेटालिक बॉन्डिंग होगी तो अगर वीक मेटालिक बॉन्डिंग होगी तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज, इसलिए डिप आता है। ठीक है। वैसे ही मेल्टिंग पॉइंट के साथ क्या क्या जुड़ा है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्या होता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? एटमाइजेशन यानी वो उसके मेटल क्या होता है, क्रिस्टल मेटल सॉलिड को मेटल गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। किसी भी चाहे एटम हो, मॉलिक्यूल हो, सॉलिड हो, उसको उसके गैसियस एटम्स में कन्वर्ट करना, उसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है। वैसे ही एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है, तो वो भी हाई होगी। ठीक है। हाँ, एक और पॉइंट के जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। क्यों? नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, because they have no unpaired electrons। तो अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इसका मतलब वीक मेटालिक बॉन्डिंग, क्योंकि फुल्ली फिल्ड D10 कॉन्फ़िगरेशन है सब में, तो as they have weak metallic bonding so their melting point is low, enthalpy of atomization is low, so they have low melting point and enthalpy of atomization, right? तो इतना melting point में कर लेना। नेक्स्ट इज डेंसिटी। तो डेंसिटी जो होती है, यू नो, एज वी गो अलोंग द पीरियड तो क्या होगा, साइज डिक्रीजेस, ठीक है, और मास इंक्रीजेस, तो ऑब्वियसली डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड, डेंसिटी इंक्रीजेस। ठीक है। और अगर डाउन द रूट जाएंगे तो मास तो ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस और साइज जो है, यू नो, पहले इंक्रीज होता है देन ऑलमोस्ट सेम। कौन सी सीरीज, 4D एंड 5D सीरीज का साइज ऑलमोस्ट सेम है ना, और इसमें भी ज्यादा साइज इंक्रीज नहीं होता है।
ठीक है। तो इस वजह से डाउन द ग्रुप वेट डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज। और इसलिए सबसे ज्यादा जो डेंसिटी होगी वो 5D सीरीज की होगी, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी, 5D, ठीक है। और उसमें भी सबसे ज्यादा होती है वो कॉम्बिनेशन। तो जो जिंक वाली सीरीज होगी, तो जिंक वाली सीरीज जो है वो तो वैसे ही एक सर्कल साइज बड़ा होता है, थोड़ा साइज बढ़ जाता है वहां पे जाके, उनकी डेंसिटी हाई नहीं हो सकती। वो उदाहरण है जिंक, कैडमियम, मरकरी, है ना, इनका साइज जो है ड्यू टू D10 कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू लार्ज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, उनका साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है एट द एंड ऑफ द सीरीज, ठीक है। इसलिए इरिडियम फॉलोड बाय ऑस्मियम, इनकी डेंसिटी जो है दैट इज मैक्सिमम, इनकी डेंसिटी जो है इरिडियम और ऑस्मियम की दैट इज हाईएस्ट, ठीक है ना। इसकी जगह होती है थोड़ी सी इरिडियम की स्लाइटली ग्रेटर। स्कैंडियम जो है दैट हैज लोएस्ट डेंसिटी, सबसे कम स्कैंडियम की और सबसे ज्यादा इरिडियम, और स्लाइटली लेस होती है किसकी, ऑस्मियम। तो अगर बात की जाए लास्ट ऑफ द सीरीज की, लास्ट एलिमेंट्स मतलब ग्रुप 12 की, तो जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मर्क्यूरी हो गया, इनमें क्या होगा, पोटेशियम हो गया, इनमें फुल्ली फिल्ड D10, फुल्ली फिल्ड D ऑर्बिटल, D10 configuration, therefore inter electron repulsions are dominating। इनमें क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस आर डोमिनेटिंग। इसलिए इनका साइज जो है थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, और बिकॉज ऑफ दैट जो डेंसिटी है थोड़ी फॉल करती है एंड वाले एलिमेंट्स, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, पहले तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है, क्या होती है, energy required to form an cation। इससे पूरा डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन बोलो। Ionization energy is the energy required to remove an electron from an outer orbital, outer from the outer orbital of an atom। की पॉइंट बोला ही नहीं जो चाहिए, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from an isolated gaseous atom. This is the main point, isolated gaseous atom। इलेक्ट्रॉन तो रिमूव सोल्यूशन में भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो रिमूव कंपाउंड में भी होते हैं, बट यहां पे बात हो रही है आइसोलेटेड गैसियस एटम, ऐसा एटम विच इज फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ अट्रैक्शंस और रिपल्शन, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसमें होता है एम गैस से इलेक्ट्रॉन निकालने की बात हो रही है, सॉलिड से नहीं, गैसियस, आइसोलेटेड गैसियस है, ये मेन पॉइंट, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हो एम सॉलिड, अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो लो ऐसे रिमूव कर देता हूं,
इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन थेरेपी। तो फिर आपने बोला एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम। तो ये भी आउटरमोस्ट शेल नहीं है जिससे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, तो इसकी जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज नॉट आयोनाइजेशन थेरेपी। तो मेन पॉइंट इज फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस। तो पहला इसका है कि देयर इज इररेगुलर ट्रेंड, देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड, देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड। in the order of ionization enthalpy। कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं। क्यों नहीं है रेगुलर ट्रेंड? बिकॉज जो आयोनाइजेशन थेरेपी है because of size and half filled, fully filled electronic configuration, because of size of half filled and fully filled electronic configurations। ठीक है। अब इनकी आयोनाइजेशन थेरेपी जो है दैट इज ionization therapy of transition metal is more than S block elements and less than P block elements। सिंपल सा पढ़ना है वो तो अलोंग द सीरीज जाएंगे तो एस ब्लॉक सबसे पहले आता है, साइज बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है इजी, और पी ब्लॉक में सबसे डिफिकल्ट, इसलिए ऐसा होगा। ठीक है। देन कम टू ये सक्सेसिव आयोनाइजेशन थेरेपी जो है डिफरेंस इन ionization therapy among the elements along the period is less than difference in ionization therapy among the elements along the period is less than in S and P block elements। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन अलोंग द सीरीज जाते हैं हम, तो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा अलोंग द सीरीज, तो इलेक्ट्रॉन जो ऐड होता है वो होता है n-1d सब्शन, मतलब पेनल्टीमेट सब्शन। जब पेनल्टीमेट में ऐड होगा न्यूक्लियर चार्ज को थोड़ा बहुत शील्ड करेगा कि पेनल्टीमेट में दो इट हैज पुअर शेडिंग बट फिर भी दे आर एक्टिंग काउंटर टू ईच अदर, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, तो न्यूक्लियर चार्ज एंड शील्डिंग काउंटर बैलेंस ईच अदर, एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करने की ट्राई करेंगे। इसलिए जो
इफेक्ट होना चाहिए न्यूक्लियर चार्ज का अलोंग द पीरियड, उतना इफेक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो ऐड हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? पेनल्टीमेट में, पेनल्टीमेट शेल में ऐड हो रहा है, n-1। इस वजह से शील्डिंग जो है वो न्यूक्लियर चार्ज को काउंटर बैलेंस कर देती है। ठीक है, कितने पॉइंट हुए? फोर्थ पॉइंट लिखो कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी इज वेरी हाई। अब क्यों वेरी हाई होनी चाहिए? क्योंकि फुल्ली फिल्ड है तो बिकॉज दे हैव fully filled, because they have fully filled the subshell. They have fully filled the subshell, which has extra stability. तो एक्स्ट्रा स्टेबल होने की वजह से इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स, इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, आयन एंथैल्पी अगर 4D और 5D सीरीज की कंपेयर करें तो किसकी ज्यादा होगी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है और 5D सीरीज, that is always keep in mind higher than that of 4D and 5D series, 3D and 4D series, due to poor shielding of 4f electrons, lengthenoid contraction। lengthenoid जिसमें contraction की वजह से साइज 4D और 5D सीरीज तो ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, साइज तो ऑलमोस्ट सेम होता ही है, बट इन एडिशन टू दैट सेम रीजन ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स 5D सीरीज की आयोनाइजेशन एंथैल्पी वेरी हाई हो जाती है। ये न्यूक्लियर चार्ज में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, साइज में इंक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए ड्यू टू पुअर शील्डिंग of 4f electrons, they have higher nuclear charge। तो याद रखना कि 5D सीरीज की आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3D और 4D सीरीज दोनों से ही ज्यादा होती है। मतलब थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो फर्स्ट और सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज दोनों से ही ज्यादा होगी। सेकंड से फर्स्ट से सेकंड जाओगे तो डिक्रीज होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। फ्रॉम 3D सीरीज टू 4D सीरीज, then there is an increase from 3 seconds time series to third। third ionization enthalpy, third ionization enthalpy of manganese is very high। क्यों ऐसा होगा वो? अच्छा, क्योंकि वो हाफ फिल्ड होता है इसलिए। हाँ, because after losing
2 electrons. Manganese requires exactly half filled B5 configuration. ठीक है. Next is change in ionization enthalpy, या हम बोल सकते हैं कि ionization enthalpy required Fe2 प्लस से Fe3 प्लस जाने में क्या हो. Third ion enthalpy of iron is very low because after losing third electron it has exactly half filled configuration. ठीक है. Though it is more than second, right? Obviously higher ion enthalpy तो higher होगी ही. ठीक है. चेंज उतना नहीं. हाँ, चेंज उतना नहीं होगा. हम चेंज बोल सकते हैं ना. ion enthalpy trends हमने पीछे भी पढ़ा कि are not regular because और रीजन ये है कि when 4s one 4s electron is removed another 4s electron enters in 3D subshell. वो जो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा वो 4s में नहीं रहेगा, किसमें चला जाता है, 3D में चला जाता है. ठीक है. and therefore there is reorganization energy there is a change in exchange energy क्योंकि पूरा reorganize हो जाएगा ना वो subshell. So there is a change in exchange energy and therefore the calculation becomes not as expected, they become complex. फिर थर्ड ion enthalpy जो है of nickel, copper and zinc are high. वैसे भी जिंक, कैडमियम, मरकरी भी तो हाई होंगी ही. सेकंड आयन एंथैल्पी हाई होगी, सेकंड की थर्ड सॉरी. तो थर्ड आयन एंथैल्पी की हाई होती है, दैट इंडिकेट मींस कि
high. That's why they show maximum of +2 oxidation state in most of its compounds. In its compounds. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपको लर्न करने हैं अबाउट आयोनाइजेशन थेरेपी. वन मोर पॉइंट इज कवर कैन बी कवर्ड कि जो थर्मल स्टेबिलिटी है, कितने पॉइंट में 10. थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स, thermal stability of compounds can be compared. On the basis of ionization enthalpy. So compound having low ionization enthalpy are more stable. Lower the ionization enthalpy of metal, more stable is the compound. ठीक है, जैसे हम लिखें कि let us compare nickel and platinum. Their ionization enthalpy, पहले फर्स्ट और सेकंड ionization enthalpy के सम की बात करते हैं और फिर थर्ड एंड फोर्थ. तो निकल के लिए अगर हम देखें किलो जूल पर मोल, तो निकल का जो वैल्यू होता है दैट इज 2.49 into 10⁻³ और प्लेटिनम के लिए वैल्यू होती है 2.66 into 10⁻³. तो इसके कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो सम ऑफ द फर्स्ट टू आयन enthalpy of nickel is less than that of platinum. Therefore, nickel 2 compounds are more stable than platinum 2 compounds. Nickel 2 compounds are more stable. अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो निकल 2 कंपाउंड जो होते हैं दे आर मोर स्टेबल देन प्लेटिनम 2 कंपाउंड्स. और अगर हम थर्ड और फोर्थ आयन enthalpy को ऐड करें तो इट इज आई होप इट इज 8.8 into 10⁻³ और ये 6.7 into 10⁻³. कितना हो जाएगा टोटल? कितना हो गया? 11.29 into 10⁻³ और ये 9.36 into 10⁻³. So if we compare some of the first 4 ion enthalpy तो निकल की ज्यादा है, प्लेटिनम की कम है. तो इसलिए प्लेटिनम 4 कंपाउंड जो हैं they are more stable than nickel 4 compounds. इसलिए for platinum K2 PtCl6 it is known, but same compound of nickel is unknown. It is not known in this oxidation state. Platinum का +4 में ही एग्जिस्ट करता है. तो ये भी आयोनाइजेशन थेरेपी के कंटेक्स्ट में आपको डाल सकते हैं. क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स इज आल्सो कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ionization enthalpy, right?